My name is Saurabh and today we are learning screenplay activity. So how the screenplay activity work and what it is. So screenplay activity is uses the AI models to automate our task. So the screenplay activity uses AI model. So what are the AI models available? So AI models are available ChatGPT, Gemini. Then we are using them to identify the elements on the screen. So how we are identifying the screen? So basically the screenplay activity captures the whole screen on the available UI, then it sends that image to the AI models to identify the elements on the screen, then it start working. So what are the things we can do in the screenplay? So we can use this screenplay activity to the VDI and the Citrix environment mainly, और हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अनस्टेबल सेलेक्टर्स के लिए और फ्रीक्वेंट यूआई चेंजेस अगर हैं हमारे एप्लीकेशन में यूज़र इंटरफेस में तो हम वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास जो स्क्रीन प्ले एक्टिविटी है उसको कंज्यूम करने के लिए हमारे पास एआई यूनिट्स का होना रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि एक यूआई यूनिट कंज्यूम होगी आपके एक एक्टिविटी परफॉर्मेंस के लिए। मैक्सिमम आप 500 स्टेप्स को परफॉर्म कर सकते हैं UiPath स्क्रीन प्ले एक्टिविटी के साथ में, बट मैक्सिमम 50 आपको परफॉर्म करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स, बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देगा। क्योंकि मैंने बहुत बार इसको ट्राई करके देखा है, अगर बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको फिर हैंडल करने में भी प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए आप छोटे छोटे चंक्स में आप स्टेप्स को दे सकते हैं स्क्रीन प्ले एक्टिविटी को यूज़ करने के लिए। सो शुरू करते हैं हम। सो स्क्रीन प्ले एक्टिविटी को यूज़ करने के लिए हमें यूज एप्लीकेशन ब्राउज़र एक्टिविटी चाहिए होती है। सो यूज एप्लीकेशन ब्राउज़र फॉर एप्लीकेशन इंटरफेस, देन वी नीड UI automation package 25.10.20 or later and AI unit enabled in our orchestrator. These two things are requirement for this AI unit. So today we are automating the RPA challenge website. So RPA challenge website को automate करेंगे हम, बट जो टाइप इनटू है और जो क्लिक है वो हम परफॉर्म नहीं करेंगे। सो ओपन करते हैं हम rpachallenge.com। सो rpachallenge.com मैंने ओपन कर लिया है। लेट्स इंडिकेट द टारगेट। So this is the modern UI, modern selectors we can use here. Simple, just a click. Then we have the Windows selectors. So what we have to do, we can edit this. So we can try to edit. So we have title here, RPA challenge. For this website the title is not going to change, so we will leave it as it is. Otherwise we can use the URL option and confirm. So it captures the URL. So in RPA challenge website we have to download the Excel file, then we can click on the start to start the automating the fields. So first we will click, take a click activity here. Click activity, download Excel file. तो टारगेट हमारे पास कैप्चर हो गया है। कंप्लेंट सेलेक्टर को मैंने ऑफ कर दिया है। Create selector. We are just checking. So we have the A name and the tag, so we can save it. Just confirm. Okay, so
So after this, what we have to do, we have to download the file. So once we click on this download Excel button, Chrome will ask us to type the path to save the file. So let's create the path first, and then we'll click, then type also. So we'll use assign activity. So in this we'll create a variable download path. तो हम कहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं? सो मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर डाउनलोड करूँगा. सो मैं यहाँ पर भी एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ इनपुट फाइल के नाम से. सो फोल्डर नेम इज इनपुट फाइल. ओके, सो हियर व्हाट वी विल डू, हियर विल ट्राई directory dot get current directory, then plus sign. Now the path will write here. So input file is the folder name, then file name. So file name will be the RPA challenge, then underscore, then we'll add a timestamp here. So now dot to string, then time and date. So dd mm yy, then mm ss. Then we have to add the file extension also. Add the file extension. So ये Excel file है. So dot xlsx. So click on this save button. Now we have clicked on the download Excel button. Now we have to take one more type into activity. तो यहाँ पर भी हम स्क्रीन प्ले एक्टिविटी का यूज़ कर सकते हैं, बट हम सिर्फ फील्ड्स को ऑटोमेट करने के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि जो AI यूनिट है वो कंज्यूम होंगी यहाँ पे. सो बेटर है कि हम कम से कम AI यूनिट्स का यूज़ करें. तो यहाँ पे फाइल नेम है, फाइल नेम को हमें इंडिकेट करना है. तो ये है हमारा फाइल नेम का इनपुट बॉक्स. आइडेंटिफाई कर दिया मैंने. कंप्यूटर विजन ऑफ कर सकते हैं हम. जस्ट कंफर्म. तो क्या टाइप करना है हमें? डाउनलोड पाथ. हमने यहाँ पे वेरिएबल पुट कर दिया है. नेक्स्ट वन मोर क्लिक एक्टिविटी हमें यूज करनी पड़ेगी सेव बटन पे क्लिक करने के लिए. सो इस सेव बटन को हमने कैप्चर कर लिया. सो स्टेप क्या है? सो फर्स्ट स्टेप, क्लिक द डाउनलोड एक्सेल बटन. देन सेकेंड स्टेप इज टू द पाथ. वी हैव टू क्रिएट द पाथ. Then we have to type the path into the input field. Then we have to click save so that the file can be downloaded. So here I have edited the selector because in the title we have ampersand of save button, but in the A name we don't have the ampersand. So we click on the validate button and then click on the save button. So what it will do? It will save the Excel file to the current input folder, input file folder. ये हमारा input file folder है. Next, what we have to do? We have to read the Excel file, but before that we have to add a delay. Why delay? Because Excel file download and save, and the next step, our for each step will move faster, so we have to add a delay. So we have the 5 second of delay. I'll do it on 10 second. 10 second का delay मैंने add कर दिया.
दिया है। फाइल अभी हमारा सेव हो गया है। फाइल सेव होने के बाद हमें एक फॉर ईच लूप लेना है। फॉर ईच रो एंड डेटा टेबल। सॉरी, इससे पहले हमें लेना है रीड रेंज, एक्सेल एक्टिविटीज रीड रेंज। रीड रेंज वर्कबुक। तो अभी ये पैकेज डाउनलोड होगा क्योंकि यहाँ पे डाउनलोड का साइन है। पैकेज इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। हम मैनेज पैकेज से भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं और एक्टिविटी सर्च करके भी उस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। Let's wait for the Excel package to be installed. Okay, so Excel package install हो गया है। तो हमें पहले रीड रेंज वर्कबुक एक्टिविटी यूज करनी है। रेंज वर्कबुक, तो ये हमारी एक्टिविटी। So what is the file name? So file name will be the download path. Ranges, so all range we need, and data table, so dt underscore data. So we are creating a data type variable, data table variable. Have the current row. Now we'll take a multiple assign. So multiple assign क्यों ले रहे हैं हम, जिससे कि हम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सबको लिख सके। ये मेरी पहले की फाइल है, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ जिससे कि मैं मल्टीपल असाइन में ईजिली वैल्यूज को असाइन कर पाऊँ। So first name, last name, company name, all these things I'm going to assign. So just copy the first name here from here. So we need to create a variable of first name. So remove this space. So current row 0. So we have to index here dot to string dot trim. So we have 7 values here. Just copy and paste. Now company name we are copying. Now we'll create a variable of company name. Role in company. Now address, email and phone number. So address variable,
करंट रो 1 इंडेक्स पर लास्ट नेम है हमारा, 2 इंडेक्स पे कंपनी नेम है, 3 इंडेक्स पे रोल इन कंपनी है, एड्रेस हमारा 4th इंडेक्स पर है, ईमेल 5th एंड फोन नंबर 6 इंडेक्स पे है। ये हमारे वेरिएबल असाइनमेंट हो गए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज द स्क्रीन प्ले एक्टिविटी। नाउ टेक अ स्क्रीन प्ले एक्टिविटी। सो यहाँ पर जो मॉडल्स अवेलेबल हैं स्क्रीन प्ले एक्टिविटीज़ में, सो हमें एक मॉडल को सेलेक्ट करना होता है। सो फर्स्ट हमारे पास है UiPath स्क्रीन एजेंट powered by Gemini, then we have GPT, then we have OpenAI Anthropic. So I'm going to use the first one, Gemini. Here what we have, here we have variables. Okay, so मैंने prompt पहले से लिखा हुआ है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। so ये है मेरा prompt, fill the input boxes. So this is the variable in first name, this is the second variable in the last name, then third. So मैंने यहाँ पे इसे पुट कर दिया है, इसे ओपन करके मैं चेक कर लेता हूँ बेसिकली। so ये variable name है, first name in the first name input fields, last name in the last name input field, company name in the company name input field. so यहाँ पे मैंने जो पूरे प्रॉम्प्ट लिखा है वो स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, तो आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं। नाउ आप क्लिक करने के बाद एक सबमिट बटन पे भी क्लिक करेगा, देन सेव। सो स्क्रीन प्ले एक्टिविटी यहाँ पे काम करेगी। देन हियर वी हैव प्रॉपर्टीज, सो मैक्स नंबर ऑफ स्टेप वी कैन डिफाइन, टाइप बाय क्लिपबोर्ड वी कैन डिफाइन, जॉब अटैचमेंट मोड वी कैन डिफाइन, देन use DOM when available, disable variable security, input mode, continue on error, timings, delay before, delay after, timeout. Then output we have result and the trace file. So we can do all these things, we can utilize. So one thing I forget, so we have to click on the start button also. button, click activity, for the start button, let's go. So I'm working with new experience. If you don't want to work with new experience, you can disable this option for old experience. So here we have only button, but it's a start button, so button can be, it's a generic name. So in the A name we have start, so I have added that. So now click on the validate button, so it's working. Click on the save and confirm. Okay, so now we are in studio. Okay, so we have an error. Okay, company name is not declared. Okay, so the variable name we are having the problem. Okay, so let's delete this. So here we'll use a first name variable, then in this last name variable. तो ये प्रॉम्प्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप यहाँ इसको लिख सकते हैं। कंपनी नेम, देन नाउ रोल इन कंपनी, नाउ एड्रेस,
Okay, so then after we'll have a congratulations screen. So after this for each loop, we'll use one more ScreenPlay activity for extracting the data from the screen. So here one more ScreenPlay I'm using. So here what we have to do, here what we have to write one more prompt. So I have written the prompt here. Wait for the congratulation on the screen to appear. If appeared, then extract the line with the score and time and store it in variable result. Okay, so I have to create one variable result. So यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही congratulations की स्क्रीन आएगी, ये जो उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, नंबर्स आपने कितने इनपुट फील्ड्स को करेक्टली फिल किया है और कितने टाइम में किया है, वो उसको कैप्चर करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर एक रिजल्ट वेरिएबल जो है वो उसमें स्टोर कर देगा. सो बेसिकली यहाँ पे जो रिजल्ट्स वेरिएबल है वो हमें क्रिएट करना है. सो मैंने क्रिएट कर दिया है रिजल्ट्स वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर ये नहीं शो कर रहा है, तो जस्ट डिलीट करके यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा रिजल्ट्स वेरिएबल. देन मॉडल चूज करना इम्पोर्टेंट है. सो अब रिजल्ट है, सो रिजल्ट को शो भी करना है हमें. तो शो करने के लिए हम मैसेज बॉक्स लेंगे. सो मैसेज बॉक्स हियर. सो द result is now the variable name result dot toString dot trim. Okay, so properties change करते हैं पहले. So यूज एप्लीकेशन ब्राउजर में हमारे पास प्रॉपर्टीज है ओपन ऑलवेज. क्लोज प्रॉपर्टी में सेलेक्ट नहीं करनी है, या फिर हम क्लोज को नेवर कर सकते हैं फॉर द डेमो पर्पस. देन रीसाइज विंडो, रीसाइज हम मैक्सिमाइज कर देंगे जिससे कि जो स्क्रीन है वो मैक्सिमम विजुअल हो जाए. Ready, let's test this out.